if he's saying eco-friendly, nature के lover, but ultimately what he is saying is मैं भी वो nature. आप अपने से you get in touch with yourself and you see the world in a different beauty. ये कहते हैं गालिब का अंदाज़ बयां, और ये नहीं कि वो बात क्या कर रहा है, वो ज़्यादा गौर करने वाली चीज़ है. रतलाम की गलियाँ आज खुश तो बहुत हो गई तुम एंड ऑल दैट. एंड बच्चन के फ़ैन हो क्या? मुझे लगा कैसी पागल लड़की है. Hi, this is Imtiaz Ali and you're watching Bollywood Hangama. Cheers! Cheers! यहाँ किसी को पता नहीं है कि तू दरअसल आइटम क्या है. सिर्फ तुझे पता है. Fantastic music, no doubt about that. Rahman is there. Kun Faya Kun, it goes into the context beautifully. The सारा जो एक spiritual transformation character का होता है, I think it's fantastic. The way it happens, he's totally raw, and the entire experience of living on his own and how he just manages the whole thing is something which is very, as a viewer, it just flows into you very very naturally. But at the same time, साड्डा हक आपको बहुत तारीफ मिल रही है गाने के लिए, बेहतरीन गाना है, and you feel the goose pimples once that song ends. But there is a perception that considering that character, apart from that song, he has never spoken about the environment during the entire film or about rights, or maybe he's not shown to be that perceptive enough कि वो इन सब चीज़ों के बारे में ऐसा जैसे कि एक concept होता है rock stars का या फिर एक rock music का कि that they talk about issues and all those things. During the entire film, Jordan's character does not have those things at any point of time. Do you think in a way it's is there an isolation over there? Important thing that I want to say about Saada Haq actually, I feel what he's saying is, if he's saying eco-friendly, nature के lover, but ultimately what he is saying is मैं भी वो nature. What he's trying to say is that just as you are stressing that plants, animals, etc., should all grow up in an environment that is natural to them. Sure. Since you are eco-friendly, do you also accept the fact that a human being is also a part of nature? And therefore he should be allowed the freedom to grow in the way that is natural to him. उसका objection personal freedom के तहत है. उसको ये लगता है कि ज़िंदगी की जो मतलब कि जो समाज और जिस तरह से रखा है, एक grid बना दिया है, which is not natural, which is societal. It is an imposition. तो कोई जो natural चीज़ होती है वो उसके आड़े आती है और उसको वो आज़ादी से जीने का मौका नहीं मिलता है, जिसके तहत जो आदमी को सही लगता है ज़हनी तौर पे वो he can't get that because somebody is saying that ये गलत है, ये सही है. अब उसके बचपन से जो उसने जो rejections face किए हैं कि घर से निकाल दिया, ये किया, और हर आदमी कह रहा है तेरा कुछ नहीं होगा, तू तो ये कर ले, हर चीज़ में गलत, तो अब वो he blasts louder than you expect. You mean to say that जो personal उसका जो एक गिरफ्त है वो उससे बाहर निकलना चाह रहा है, and that can be construed by other people in different light altogether. Fair enough, absolutely. Something about Kun Faya Kun, एक spiritual personality आपकी खुद की भी है, सूफी मलेश आप लगते हैं. जी नहीं आप, बट ये ज़रूर है कि ऐसी जगह पे जा कर के कोई भी सेंसिटिव इंसान होता है तो उसको कोई ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप जाते हो and you feel something interesting coming from within. I don't feel that there is any magic, but I do feel that there is a lot of magic and power inside anybody. और कहीं ना कहीं आप अपने से you get in touch with yourself and you see the world in a different beauty, which is not necessarily good or pleasant, but it's just a opening of the soul, which is an experience that happens to Jordan. And रहमान साहब जो थे वो इसके बारे में बहुत केयरफुल थे. वो कह रहे थे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बस एक और कव्वाली बना दी, कोई मतलब कोई ख़ास चीज़ होनी चाहिए इसके अंदर. So then we started working.
It's a fantastic composition, no two ways about that. You have this, I think, very fine ability to get character actors who do splendidly in your movies. In this film, you have Kumud Mishra. I think he's fantastic. सर आप ये बात कह रहे हैं ना, अभी मेरे दोस्त हैं राजपाल, उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा है फिल्म अच्छी है, सब कुछ ठीक है, कैरेक्टर्स एक्टर्स आर वर्थलेस. बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है. I think what Piyush Mishra has done for the film, he is fantastic. In fact, Piyush Mishra, you know, I have a grievance that मेरे favorite actor आप हर फिल्म में होते हैं, टेडी मौर्या. आपने उनको बहुत कम रोल दिया है इसमें. नहीं मगर लव आजकल से ज़्यादा दिया है. But I think you should be using him more often. Decent Hotel हर वक्त हम लोग याद रखते हैं उसको उनके काम को. And वो सिर्फ एक उनका मोमेंट है, लेकिन जो इवन वो जिसके अंदर जिस तरीके बता रहे ऐसे करो यार. I think you know he has a moment. He's an art director basically. He's an art director. He's an actor. He's a lot of things. He's not working in this film as the art director, but Love Aajkal and Jab We Met he's done as the art director. Right. सुन, आइटम कैसा है? एकदम कड़क, ब्यूटी. थैंक्स. 3 घंटे. Okay, and what about Kumud Mishra and Piyush? Extremely prolific actors from theatre in Delhi. Piyush, of course, is much more senior than Kumud. Always wanted to work with these actors and never really got a great opportunity to do so. I'm particularly excited about having worked with Kumud because the kind of sensitivity that he has, he's so pure in his approach as an actor that I learned a lot working with him. टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है. दिल टूटा कभी? कभी प्यार भी हुआ तुझे? Piyush Mishra, I think he has some of the best lines in the film. That moment when he's doing the mileage and he's explaining image hoti hai, brand hota hai, I think he was outstanding. That particular scene was outstanding in fact. He's done so well. It's not easy, you know, you must understand. दिल्ली की गर्मी में हम शूट कर रहे हैं जब और कड़ाके वाली धूप में उनके बदन में तेल लग रहा है. मतलब क्या हो रहा है, मतलब उनका ऑमलेट बन रहा था. It was like he's getting fried in the sun and the whole unit, he kept the whole unit in laughter through that one day. सीन तो 2 मिनट का है मगर लगता तो दिन है ना शूट करने में. So he kept the whole thing really like Ranbir was constantly almost going to laugh through the day because of Piyush. मतलब ये लड़का उस्ताद जी, ये हमने कह दिया ना डिंगरा साहब, इस पर लगा दीजिए. No, I think it's fantastic. There are many scenes in fact. Even वहाँ Prague में जब in the party when Ranbir just suddenly goes away. Artist. Yeah. I think he has many, and at the airport when he tells him that मुझे nervous breakdown हो जाएगा. Nervous breakdown. Many moments. I think he has many moments in the film which is fantastic as well. It's very obvious that even the way you tell your story, even here, non-linear आपका format है. But you start your film in a certain manner. The guy is just having a fight in Prague, and he suddenly just runs away after that, and you go into different territory altogether. So you have that thing, and somewhere rooming के आपने quote से आपने film को आपने end किया है. Now any art whatsoever, I think it's dependent on 2 things, which is form and content. Basically how you're just assimilating form and content primarily. When we see a Jab We Met, Ratlam का आपका जो scene है जो उसका station का, maybe the set is not the best set in the world, but लेकिन वो जो scene है कि वो रतलाम की गलियों में वो जो घूम रहे हैं दोनों के दोनों, now that is priceless. I think that is something which will always remain. That उसमें dialogues जो बच्चन साहब की तरह जिस तरीके से करीना बोल रही है. आपको बहुत पसंद आई है. I'm a fan of Jab We Met, in fact. You know, that content over there, somewhere in that film, somewhere it just supersedes almost everything. And maybe that is one of the lasting factors of that film as well. And some artists would say that if you have to choose between form and content, I'll choose content. Yeah. Maybe. What is your viewpoint on this aspect? I feel that form and content is not somehow separate from each other completely. I feel that there are of course, content is the main thing. Somehow, sometimes in expression, content and form both are interrelated, I'd say. And they are not separate things in the way that the form should suit the content and should become a part of the content. इसलिए आप देखिएगा जैसे उर्दू शायरी में भी हमेशा अंदाज़े बयां अंदाज़े बयां इज़ फॉर्म, इट्स मगर उस पर इतना ज़ोर दिया जाता है कि कहते हैं गालिब का अंदाज़े बयां, और ये नहीं कि वो बात क्या कर रहा है वो ज़्यादा गौर करने वाली चीज़ है कि बातें तुम वही कर रहा है. मतलब मैंने भी बहुत सोचा है इस शेर इस जुमले के बारे में, और बट आई फील दैट वो एक दूसरे से अलग नहीं है.
ऐसा मुझे लगता है। एंड हाँ, मुझे ये लगता है कि जब ऐसा, जैसे कि मैं जब वी मेट में वो सीन लिख रहा था कि रतलाम की गलियाँ आज खुश तो बहुत हो गए तुम एंड ऑल दैट, एंड बच्चन के फ़ैन हो क्या, मुझे लगा कैसी पागल लड़की है। मुझे खुद मज़ा आया ऑब्वियसली, एंड लोगों को भी लगा होगा कि व्हाट द हेल इज शी टॉकिंग अबाउट। इट इज़ सो वियर्ड कि बच्चन के फ़ैन हो। सॉरी, तुम अपने प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करते, राइट? बच्चन के फैन हो क्या, एंग्री यंग मैन? आज खुश तो बहुत हो गए तुम, हैं? अग्निपथ, बताओ ना। बट वैसे देखा जाए तो वो भी क्यों हो रहा है, वो कहानी तो नहीं है। तो फिर ये कि अगर वो नहीं होता तो भी कहानी तो वैसे ही होती, तो कंटेंट तो ठीक है। अब वो जो है वो क्या है, वो अंदाज़े बयां है, वो लड़की वो कह रही है तो लड़की का वो कंटेंट है, बट वो कंटेंट भी क्यों है? क्या वो कहानी का कहने का तरीका है जी? कि कोई कहे कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, क्या वो अपनी कहानी को कहने का तरीका है या वो कहानी है? तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ। अब इसमें जैसे कि बच्चन के फैन हो क्या, इसका कहानी से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ वे ऑफ पोर्ट्रेइंग समथिंग आई फील। सो आई डोंट नो, देयर इज नो स्ट्रेट लाइन बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट। You creative producer for this film called My Girlfriend is an Agent. Okay, it's a Korean film that is being remade into Hindi. So tell us something about that. It's being directed by Bosco. Bosco is my friend, and UTV and Pi Films are going to be producing this. I see a lot of potential in Bosco to make something which is very colorful, very sparky, very vibrant. I know that I can't direct a film fully like that. I can't. But I've also got something to contribute to a film like that, in whichever level that I'm required to. Whatever Bosco thinks I can add, I'm there to do. So that's really my role. अब वो स्क्रीन पे क्या लिख के आएगा, वो जो भी लिख के आए, but basically my role is going to be that if he feels that I should work with him on the music, let's say, sure, तो वो मैं करूँगा। या अगर वो चाहें कि मैं किसी तरह से उनकी स्क्रिप्ट में बाउंस बोर्ड रहूं, वो करूँगा, या जो भी है। मतलब आई जस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट दिस फिल्म कम्स आउट रियली वाइब्रेंट एंड इंटरेस्टिंग एज इट कैन। खुले पहनों से Like that was Imtiaz Ali talking about, I think, a whole lot of aspects of Rockstar, almost everything that is there. The criticism, the positive, a bit of negative as well that has been doing the rounds in terms of critics' reviews and all. He's spoken about one of my favorite films, Jab We Met. We've spoken why people have been liking it so much, and his forthcoming plans as well. Thank you very much, Imtiaz Ali. Lovely to have you. Sorry to take so much time. मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा था. Yeah, I think we should be saying that. Thank you so much. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.